মাধব কুঞ্জ বিহরি জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহরি মাধব কুঞ্জ বিহরি ভক্তি জন বলব গিরিবর ধারি জয় কুপি জন বলব গিরিবর ধারি যশোদা নন্দন ভজ জন রঞ্জনা যশোদা নন্দন ভজ জন রঞ্জনা যমুনা তীর ছাড়ে যমুনা তীরা চারি জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহরি মাধব কুঞ্জ বিহরি জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহরি কোটি জন বলব গিরিবর ধারি জয় গোপী জন বলব গিরিবর ধারি যশোদা নন্দন ভজ জন রঞ্জন যশোদা নন্দন ভজ জন রঞ্জন যশোদা নন্দন ভজ জন রঞ্জন যমুনা তীরা বনচারি যমুনা তীরা বনচারি জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহরি জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহরি শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ চৈতন্য প্রভু গৌর নিত্যানন্দ প্রভু ও ভাহিমাম ভাহিমাম
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Nitai Gaura Haribo, 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 Go Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Go Haribo. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya 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 Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Gaura Premanandi, Hari Hari Bo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nastaprayasvaradrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, we should first offer respectful obeisance under the personality of God in Narayan, Narayan Rishi, the supermost human being, Mother Saraswati, the goddess of learning, Srila Vyasadeva, the author, and Srila Prabhupada, translated commentator and dearmost spiritual master. Surely we would be completely lost without him. By regular attendance in classes on Srimad Bhagavatam and by rendering of service unto the pure devotee, all that is inauspicious to our hearts is practically destroyed to nil. And thus transcendental loving service to the personality of Godhead
was addressed as Uttama Shloka, is established as a irrevocable fact. Anybody know what that word irrevocable means? Cannot be taken. Impossible to take back. So just like you have a bank account, right? And you put $100 in there, and you do a few things, you go to the bank, there's no money left. But in our practice of Krishna consciousness, it's just the opposite. You put $100 in the bank, next day you take it out, you go back, and your bank says, oh, you have $100 in the bank still. Like, you can use it. So what do you mean? I was here yesterday, I took it all out. No, it's still there. Every day it's still there. Not only that, it's increasing day by day. We have no idea how much money we have in our transcendental bank account. But at some time, according to his supreme desire, because another name of Krishna is Svarat, he's completely independent. He does things, but he does them on his own time frame. We'll talk about that a little bit later. But it's sitting there. It's waiting for us. That's called faith, that we wait and agree to suffer our lot. Huh? Small introduction. What's that? Introduction. Introduction of your introduction. What is your introduction? Small introduction. Okay. What do I need to include in that introduction? You will tell me something about it. Yeah. Just 2 minutes. Devotees do not know maybe. Okay. I'm a very fallen soul. I come from Patala Loka, and it took me a long time to get up here to one of the middle planets, Earth planet. But I'm trying. Right now, I'm a member of the insect species, and I'm working very hard to try to come up to the human platform. And I'm hoping that some future lifetime, by the mercy of my spiritual master in Krishna, I may be blessed to do that. Is that a good introduction? Thank you. My name is Banbhatta Das. Actually, Das Anudas. And is that what you want? Like a little bit, tell about myself? Or I don't understand what you want. Okay. And I joined the Hare Krishna movement in 1972 in San Francisco by the grace of my Vartman Pradarshika Guru. The person who leads you to Krishna consciousness is your Vartman Pradarshika Guru. And that would be my dear brother, who, out of his supreme kindness, dragged me by the hairs, although I was completely unwilling to surrender at Prabhupada's lotus feet, which I'm still trying to do. It's a many lifetime process. So we're reading Srimad Bhagavatam today. It looks like it's Canto 10, Chapter 8, text number 28. And as a part of my introduction, I'd like to say I'm extremely unqualified. What to speak of saying something in reference to the 10th canto of Srimad Bhagavatam, Krishna's personal transcendental activities, but I'll try to say something that could be of value, and I'll share some of the insights I've had and some of the realizations that maybe may help devotees. And first of all, thank you so much for allowing me to speak and for giving me your association. This is my first time here in Ujjain, and I've heard so many wonderful things about the temple and of course, the Ayurvedic Treatment Center also. And I was my brother especially, he was a very, very close friend of Bhakti Charu Maharaj. And how many people are direct disciples of Bhakti Charu Maharaj? Okay, quite a few, nice. And, it was extremely
devastating when he left the planet. When someone like that leaves the planet, there's just like when Prabhupada left the planet, Krishna is the greatest cheater. And so many times he takes these amazing devotees back to him when we least expect it and we're least ready. But it always forces us to become more dependent on his mercy. And so I tell you, the first time I came here last night, and there was a little kirtan, and the deities were open, and I couldn't believe it. I felt like I died and went back to the spiritual world. I'll be honest with you, I have never seen deities so incredibly beautiful and spectacular and present. Their mood is just exuding from them in such a powerful way. And that's not independent. That's not just due to them. That's due to all of you who are worshiping them so nicely and doing such nice service. Yeah. कल मैं उज्जैन मंदिर में आया और जब मैं आया तो आप लोग संकीर्तन कर रहे थे मेरे स्वागत के लिए और भगवान के विग्रहों का दर्शन खुला हुआ था। जब मैंने भगवान का दर्शन किया तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि इतने सुंदर कैसे हो सकते हैं। वो उनकी प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति तो है ही, लेकिन आप सबकी भक्ति की वजह से वो यहाँ पर हैं। So today's verse, there's a board, something. It's written down? Okay. So text 28. Krishnasya gopyo ruchiram. Krishnasya gopyo ruchiram. Krishnasya gopyo ruchiram. Viksha kumara chapalam. Viksha kumara chapalam. Viksha kumara chapalam. Shrinvantya kila tan matu. Shrinvantya kalatang matu. Shrinvantya kilatang matu. Iti ochu samagata. Iti ochu samagata. Iti ochu samagata. Krishnasya gopya ruchiram. Viksha kaumara chapalam. Shrinvantya kilatang matu. Idiochu samagata. Krishnasya gopya ruchiram. Viksha kaumara chapalam. Shrinvantya kilatang matu. Idiochu samagata. Please chant. Krishnasya gopya ruchiram. Viksha kumara chapalam. Shrinvantya kilatang matu. Idiochu samagata. Krishnasya gopya ruchiram. Viksha kumara chapalam. Shrinvantya kilatang matu. Iti ochu samagata. Krishnasya gopya ruchiram. Viksha kumara chapalam. Shrinvantya kilatang matu. Iti ochu samagata. Krishnasya gopya ruchiram. Viksha kumara chapalam. Shrinvantya kilatang matu. Iti ochu samagata.
कृष्णस्य गोप्योरुचिरा वीक्ष्य कौमारचापला श्रीमन्त्या किल तन्मातुः इति योचु समागता। Mataji's. कृष्णस्य गोप्योरुचिरा वीक्ष्य कौमारचापला Srimantya kila tanmatur idiochu samagata Krishnasya gopyaruchiram Viksha komara chapalam tanmatur idiochu samagata. Any other Maharajas? Krishnasya gopyaruchiram Viksha komara chapalam Srimantya kilatan matur Dihochu samagata Krishnasya gopyaruchiram Viksha komara chapalam Srimantya kilatan matur Dihochu samagata. All right. So how long does class go? 9 o'clock. 9 o'clock. Is that very strict? 9 o'clock they have breakfast. Right. Breakfast. Okay. Word for word. Please repeat. Krishnasya. Of Krishna. कृष्ण का Gopya. All the gopis. सारी गोपियों ने Sorry. Ruchiram. Very attractive. Very attractive. Viksha. Viksha. Observing. Observing. Komara chapalam. Maharaja. The restlessness of the childish pastimes. Restlessness of the childish pastimes. Shrinvantya. Just to hear them again and again. Just to hear them again and again. Kila. Indeed. Indeed. Tatmatu. Matuhu. In the presence of his mother. In the presence of his mother. Iti. Thus. Ha. Indeed. Indeed. Uchu. Said. Samagataha. Assembled there. Translation. Observing the very attractive, childish restlessness of Krishna, all the gopis in the neighborhood, to hear about Krishna's activities again and again, would approach Mother Yasoda and speak to her as follows. Please repeat. Observing the very attractive, childish restlessness of Krishna, all the gopis in the neighborhood, to hear about Krishna's activities again and again, would approach Mother Yasoda and speak to her as follows. You want to do the transition? कृष्ण की अति आकर्षक बाल सुलभ चंचलता को देखकर पड़ोस की सारी गोपियां कृष्ण की क्रीड़ाओं के विषय में बारंबार सुनने के लिए माता यशोदा के पास पहुंचती और उनसे इस प्रकार कहती। Purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Krishna's activities are always very attractive to devotees. कृष्ण की क्रीड़ाएं भक्तों को सदैव अत्यधिक आकर्षित लगती हैं। Therefore, the neighbors इसीलिए पड़ोसी सखियां who were friends of Mother Yasoda जो माता यशोदा की सखियां थीं, informed Mother Yasoda माता यशोदा को बताती थीं of whatever they saw Krishna doing in the neighborhood. जो कुछ भी कृष्ण अड़ोस पड़ोस में करते थे। Mother Yasoda, माता यशोदा just to hear about the activities of her son, अपने पुत्र की क्रीड़ाओं सुनने के लिए stopped her household duties
अपने घर के कामकाज बंद कर देती and enjoyed the information और आनंद लेती थी given by the neighborhood friends. पड़ोसी सखियों द्वारा देने जाने पर। Om Agyantamanandasya Gananjana Salakaya Chakshurunmritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Shravitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Darati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shri Uttaparakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Purijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Patan Sagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha E Krishna Kurunu Sindhu Dinabando Jivapate Govisha Govika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshware Vishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchako Paturubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Paditanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitya Bhagavatam class, devotees here presently and on the internet as well. As I mentioned before, my name is Banbhatta Das Anudas. And thank you for allowing me a chance to speak something, although I'm completely unqualified and have no realizations. I'll try to share whatever I can, but only by your blessings. Thank you very much. Please आप bless. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप श्रीमद् भागवत की कक्षा सुनने के लिए आए हैं, और जो ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद। मेरा नाम बानभट्ट दास है, मैं आप सभी का दास अनुदास हूँ। मेरे अंदर कोई योग्यता और साक्षात्कार नहीं है, लेकिन आपकी कृपा से मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। Please bless me that whatever I say can be in line with our Guru Parampara and that it may be beneficial as well. आप कृपा कीजिए कि मैं जो कुछ बोलूं वो परंपरा के सिद्धांत के अनुसार हो और आप लोगों की कुछ मदद कर सके। So, these are Krishna's transcendental pastimes. तो यहाँ पर कृष्ण की दिव्य लीलाएं हैं, And we've been waiting so long और हम लोग इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे to hear these pastimes of Krishna. ये कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने के लिए, And they are so incredibly powerful. और ये अतुलनीय अद्भुत हैं। Because as Krishna says in the Bhagavad Gita, कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, Janma karma chame divyam evam yoviti tattva chaktva deham punarjanma naiti mam iti surjuna. Whoever understands the transcendental nature of my birth and activities, जो कोई भी मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है, what happens? क्या होता है? What's the result of क्या understanding it? परिणाम है? One goes back to home, back to the spiritual world, वो अपने नित्य घर भगवत धाम को चला जाता है, never to return to this world of birth, death, disease, and old age ever again. पुनः ये जन्म मृत्यु व्याधि के संसार में लौट करके नहीं आता, Just by hearing and understanding Krishna's transcendental pastimes. केवल कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने से और उनको समझने से। So, what does Krishna say in Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter? कृष्ण भागवत के प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय में क्या बताते हैं? Shrinvatam Swagata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridyantashto Bhadrani Vidunoti Suritsatam. He says that when Krishna is in our heart, कृष्ण हमारे हृदय में है, and when we are listening intensely और जब हम लोग ध्यान से श्रवण करते हैं to Krishna's name, form, and activities, कृष्ण का नाम गुण रूप लीला, Krishna is in our heart. कृष्ण हमारे हृदय में है। What's he doing? हमें देखते हैं क्या वो क्या कर रहे हैं? Is he just sitting there observing us? केवल वो क्या देख कर रहे हैं हमारी क्रियाओं को? No, he's working hard. वो बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे हृदय में। He's cleaning our heart कृष्ण हमारे हृदय को साफ कर रहे हैं of everything inauspicious. जो भी अभद्र वस्तुएं हैं, And then more and more,
और ज्यादा से ज्यादा we'll be able to understand his pastimes. हम उनको जिससे समझ When we're sitting down reading these pastimes of Krishna, जब हम बैठ करके कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते हैं, we are not in this material world. हम इस भौतिक संसार में नहीं हैं। We are practicing yoga. हम लोग योग का पालन कर रहे हैं, Not just any yoga. कोई साधारण योग नहीं। We are practicing the highest yoga. हम सर्वश्रेष्ठ योग का पालन कर रहे हैं। And we are not just any yogi. हम कोई साधारण योगी नहीं है, We are the greatest yogi. हम सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। I'm not saying that. Krishna says that. मैं नहीं कहता, कृष्ण स्वयं कहते हैं। Yoginam api sarvesham mangatina taratmana shravan bhajate yomam samayukta tamamata. That of all yogis, he was always thinking of me with love within his heart and thinking how he can serve me. That is the greatest yogi. सभी योगियों में से जो योगी मुझ पर ध्यान करता है और मेरी सेवा में संलग्न होता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। So this chapter began with the Gargamuni coming and presenting Krishna's astrological chart. यह अध्याय शुरू होता है गर्ग मुनि के आने से और कृष्ण का कुंडली बनाने से, And giving his name, giving ceremony. और उनके नामकरण संस्कार के द्वारा। And he warned Nanda Maharaj और उन्होंने नंद महाराज को चेतावनी दी थी that Kamsa would hear of this and he would increase his persecutions. कि कंस इसके बारे में जब सुनेगा तो वो अपनी और ज्यादा दुष्टता दिखाएगा। And so they did it in a coward shed. तो उन्होंने गुप्त रूप से गौशाला में ये संस्कार किया And only special people were invited. और केवल चुनिंदा लोगों को आमंत्रण दिया गया। Isn't it incredible? क्या ये अभूतपूर्व नहीं है? How incredibly fortunate we are. हम कितने सौभाग्यशाली हैं। We weren't there. हम वहां पर नहीं थे। We had no idea what was going on. हमें कोई भी संकेत भी नहीं था कि वहां क्या चल रहा है। But we are able to be there now. लेकिन हम अभी वहां पर पहुंच सकते हैं। There's no difference between then and now. अभी और उस समय में कोई भी अंतर नहीं है। Through transcendental vibration, केवल दिव्य ध्वनि सुनकर Krishna is completely present in his name, form, and pastimes. कृष्ण अपने नाम, रूप और लीलाओं में स्वयं उपस्थित रहते हैं। And the same benefit we can get sitting here and listening, हमें वही लाभ यहाँ पर बैठ करके लीला श्रवण करने से मिलेगा, depending on the desire of our desire to hear. हमारी सुनने की इच्छा पर वो निर्भर करेगा। We can get that same realization as if we were there personally 5,000 years ago. हमें वही लाभ मिलेगा जैसे कि 5000 वर्षों पहले वहां पर उपस्थित लोगों को मिला था। So Gargamuni told about the qualities of Krishna. गर्ग मुनि ने कृष्ण के दिव्य गुणों के बारे में बताया। And let me just repeat this because it's so nice to hear. हम इसको दोबारा दोहरा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही रोमांचक है। Gargamuni said, this son, गर्ग मुनि ने कहा कि ये पुत्र, this child, the son of Rohini, ये जो बालक है, रोहिणी का जो पुत्र है, will give all happiness to his relatives and friends ये सभी संबंधी और मित्रों को खूब आनंद देगा by his transcendental activities अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा and qualities. और गुणों के द्वारा। Therefore, he will be known as Rama. इसलिए उन्हें राम कहलाएंगे। And because he will manifest extraordinary bodily strength, और क्योंकि वे बहुत अभूतपूर्व बल का प्रदर्शन करेंगे, he will also be known as Bala. ये बलराम भी कहलाएंगे। Shri Balaram ki jai! Krishna Balaram ki jai! Moreover, because he unites two families, Vasudev's family and the family of Nanda Maharaj, क्योंकि ये दो परिवारों वसुदेव तथा नंद महाराज के परिवारों को जोड़ने वाला है, he will be known as Sankarshan. यह संकर्षण भी कहलाएंगे। Your son Krishna आपका पुत्र कृष्ण appears as an incarnation in every millennium.
हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है। In the past, he assumed 3 different colors: भूतकाल में उन्होंने 3 विभिन्न रंगों में white, red, and yellow. गौर, लाल तथा पीत धारण किया, And now he has appeared in a blackish color. और अब वह श्याम काले रंग में उत्पन्न हुआ है। In another Dwapar Yuga, अन्य द्वापर युग में he appeared as Lord Ramachandra वे रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए। in the color of Shuka, of a parrot. उनका रंग तोते के समान था। All such incarnations have now assembled in Krishna. अब ऐसे सारे अवतार कृष्ण में एकत्र हो गए हैं। Okay, so he gives more descriptions in there. So Prabhupada begins the purport. He says how Krishna's activities are always very attractive to the devotees. श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि कृष्ण की लीलाएं भक्तों को खूब आकर्षित करती हैं। In fact, that's why Krishna comes to this world, इसी उद्देश्य से कृष्ण भौतिक संसार में आते हैं, to attract us back to the spiritual world. जिससे वो हम सबको भगवत धाम के प्रति आकर्षित कर सके। And his activities are so pleasing उनकी लीलाएं बहुत मनमोहक हैं that devotees become endeared to him. कि भक्त उनको बहुत प्रेम करने लगते हैं। But he displays many different qualities कृष्ण बहुत सारे दिव्य गुणों को प्रदर्शित करते to हैं, teach us that all the qualities in this world, जो बताते हैं कि इस भौतिक जगत के सारे गुण, even the so-called bad qualities जो बुरी आदतें भी हैं, and mischievous qualities, दुष्टप्रद गुण भी हैं, like stealing, जैसे चोरी करना, like breaking pots, जैसे भांडों को फोड़ना, like pinching babies' bottoms, जैसे बच्चों को चिमटी खोदना, and letting the calves go of the neighbors और बछड़ों को गायों की तरफ छोड़ देना, so they would drink all the milk from their mothers, जिससे वो सारा दूध पहले ही पी and they जाएं, would go to milk the cows and there would be no milk. और जब ग्वाले दूध दोहने जाएं तो उन्हें कुछ दूध ना So मिले। similarly, Krishna is also very mischievous with us. सो कृष्ण बहुत ही नटखट है हमारे साथ भी। And what we have to do as devotees, as practicing sadhakas, और हमें साधकों के नाते क्या करना चाहिए, is we have to start coming up to a higher level of Krishna consciousness, हमें हमेशा हमारी कृष्ण चेतना में वृद्धि करनी चाहिए, to the stage where we start seeing Krishna in everyone and everything. हमें इस स्तर तक पहुंचना चाहिए कि हम कृष्ण को हर स्थिति में और व्यक्ति में देख सकें, And our spiritual advancement और हमारी आध्यात्मिक उन्नति of this level of Krishna consciousness which we are practicing to come to, और इस कृष्ण चेतना के स्तर पर पहुंचने के लिए this practice of spontaneous devotional service, जो कि रागानुगा भक्ति का स्तर है, this will be tested and is tested और every day इसका परीक्षा हर दिन होगी, हर स्तर पर होगी, in our mind, हमारे मानसिक स्तर पर, how we deal with different devotees, कि हम दूसरे भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, how we deal with people who are difficult in our life. हम उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो हमारे साथ कठिन व्यवहार करते हैं, What are all our relationships? हमारे संबंध कैसे हैं, They're nothing but Krishna. केवल कृष्णमय होना चाहिए। Krishna has incarnated as our worst enemy. कृष्ण हमारे कृष्ण सबसे बड़े शत्रु के रूप में कृष्ण आए। He's actually our best friend. कृष्ण हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। But this world, we have to learn the duality. बट इस भौतिक जगत में हमेशा द्वैताभास होता है, This is what makes us strong as devotees. और इसी के कारण हम और अपनी भक्ति में दृढ़ हो जाते हैं। And as we go on in our devotional practice, और जब हम अपनी भक्ति का अनुसरण करते रहते हैं, depending how we're able to see everything, देखते हैं कि हम कैसे अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, our sickness, हमारी बीमारियां,
our so-called enemy, हमारे दुश्मन, persons who give us difficulty, दूसरे लोग जो हमें कष्ट दुख देते हैं, who rub us the wrong way. जो हमें बुरी रूप से रगड़ देते हैं, Krishna's teaching us by practice कृष्ण हमें सिखा रहे हैं to develop these higher qualities, कि हम अपने उच्चतर स्तर पर पहुंचे। which only by developing them केवल उन गुणों को अपनाने से can we be allowed हम आध्यात्मिक जगत में, to enter into Krishna's pastimes. आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाएंगे। So in America, अमेरिका में I live in New Vrindavan. मैं न्यू वृंदावन में रहता हूँ। It's a spiritual community that Prabhupada created. वो एक आध्यात्मिक समुदाय है जो श्रील प्रभुपाद ने बनाया है। Actually, Varshan Maharaj, who is our resident sannyasi in New Vrindavan, वर्षाना महाराज जो न्यू वृंदावन के स्थानीय सन्यासी हैं, he explains how Srila Prabhupada, वो समझाते हैं कि कैसे श्रील प्रभुपाद ने, because of who he is, जिनके he called the spiritual world down to this mundane place of existence in America. श्रील प्रभुपाद ने अपने आध्यात्मिक बल से आध्यात्मिक जगत को अमेरिका जैसे राष्ट्र में भी ले आए, That he called New Vrindavan. फिर उन्होंने न्यू वृंदावन की रचना की। And Prabhupada explained to the devotees और प्रभुपाद ने भक्तों को समझाया that you no longer have to go to Vrindavan, India. आपको भारत के वृंदावन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, That this is Vrindavan. ये नव वृंदावन ही वृंदावन है। Just who was Srila Prabhupada? Who is Srila Prabhupada? हम कल्पना कर सकते हैं प्रभुपाद कौन है। By his potency, उनकी अपनी निजी शक्ति से, by his transcendental potency, he was able to call the spiritual world down to a mundane place of existence in a place known as America in the state called West Virginia. श्रील प्रभुपाद अपने आध्यात्मिक बल से आध्यात्मिक जगत को अमेरिका जैसे राष्ट्र में ले आए और न्यू वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया नाम के प्रांत में वृंदावन बसा दिया। And he taught us how we could begin to see Krishna within everything. और हमें सिखाया कि कैसे हम कृष्ण को हर जगह देख सकते हैं। This is what Srila Prabhupada's teaching us. यही श्रील प्रभुपाद सिखा रहे हैं। He's teaching all of us. हम सबको सिखा रहे हैं। Who is Srila Prabhupada? श्रील प्रभुपाद कौन है? He's not an ordinary spiritual master. श्रील प्रभुपाद कोई साधारण गुरु नहीं है, He's a Uttama Adhikari. वे एक उत्तम अधिकारी हैं। What is Srila Prabhupada's innermost desire? श्रील प्रभुपाद का आंतरिक इच्छा क्या थी? It's for all of us to follow in his footsteps and also become Uttama Adhikaris. श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि हम सभी उनका अनुसरण करके उत्तम अधिकारी बने। So every day we're faced with challenges. हम हर दिन बहुत चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। In the third canto of Srimad Bhagavatam, तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवत में बताया गया है, Lord Kapil's mother Devahuti कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को बताते is हैं, explaining this process of Sankhya सांख्य दर्शन बताते हुए to his mother. अपनी माता को, And as he's explaining it, और जैसे जैसे वो उसे समझा रहे हैं, towards the end of his explanation, अपने प्रवचन के अंत में his mother asks him a question. माता देवहूति ने प्रश्न किया। She says, I understand what you're telling me, मैं समझ पा रही हूँ कि आप मुझे क्या बता रहे हैं, and it all makes sense, और ये सब बड़ा ही समझने योग्य है, but how is it possible लेकिन ये कैसे संभव है for us, the soul, in our conditioned state of existence, to become what's the word? To become renounced from material sense gratification. ये कैसे संभव है कि बद्ध जीवात्मा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्त हो सके? How is it possible to become aloof from the activities of our senses? हम अपनी इंद्रियों की क्रियाओं से कैसे दूर रह सकते हैं? Because when we just look at a sense object, क्योंकि जब हम विषय वस्तुओं को देखते हैं, the senses immediately grab it. हमारी इंद्रियां तो उनको It's an छूना चाहती हैं। unconscious thing.
ये एक सामान्य प्रक्रिया है। How is it possible we can become detached? हम कैसे इन इंद्रिय तृप्ति से विरक्त हो सकते हैं? And Lord Kapila Dev explains that it is very difficult. भगवान कपिल मुनि बताते हैं कि हाँ, ये बहुत कठिन है, But it is possible. लेकिन फिर भी ये संभव है। As Krishna says in the Bhagavad Gita, what does Arjuna say? जैसा कि कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को समझाते हैं That our mind, the mind is like, to control the mind is like controlling the wind. अर्जुन जैसा कि अपनी बात बताते हैं कि मन को पकड़ना वायु को वश में करने से भी कठिन है। Who can control the wind? वायु को कौन वश में कर सकता है? And yet the mind is a central point of the entire yoga practice. और मन से ही सारी योग पद्धतियां शुरू होती हैं। The mind is our best friend or our worst enemy. मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बुरा शत्रु हो सकता है। And Krishna says if you conquer your mind, और कृष्ण बोलते हैं अगर आपने मन के ऊपर विजय कर ली, it's so powerful you will conquer me. इतने आप शक्तिशाली बन जाएंगे कि आप मुझे भी जीत लेंगे। When a yogi conquers the mind, he conquers the super soul. जब योगी मन को वश में कर लेता है तो वास्तव में वो परमात्मा पे विजय प्राप्त करता So है। Krishna there also, he says it's very difficult, but it is possible by constant practice and by detachment. कृष्ण बोलते हैं कि ये बहुत कठिन है मन को वश में करना, लेकिन नित्य अभ्यास से और विरक्ति से इसको किया जा सकता है। And Lord Kapila Dev says the same thing to his mother Devahuti. कपिल देव भी वही सिद्धांत को अपनी माता को बताते हैं। It is, granted, it is very difficult. ये बहुत ही कठिन वस्तु है, But it is possible by a sincere practice for a long time. लेकिन ये संभव है अगर हम गंभीरता से बहुत लंबे समय तक भी इसका अनुसरण करें। So in this process of bhakti yoga, तो ये भक्ति के जो पथ है, we are trying to become हम बनना चाहते हैं। what's that verse? Apratiyata? Yeah, what's the सावै पुंस Savai Pumsam Bhuro Dharmo Athoks Yatod Bhakti Rahoksaje Ahaitiki Apratiyata Yayama Supersiddhiti. To completely satisfy ourselves, which is the purpose of everything we're doing. हम जो भी कुछ करते हैं आत्म संतुष्टि के लिए, तृप्ति के लिए करते हैं। We have to become free हमें मुक्त होना है from our own personal desires स्वयं की भौतिक इच्छाओं से, for sense gratification. इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से। And we have to become detached. हमें विरक्त होना है। So the best process for doing this और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए सबसे उत्तम वस्तु है, and coming to this level of detachment, इस वैराग्य के स्तर तक पहुंचने के लिए, by which we can sit and absorb ourselves in Krishna's pastimes and realize Krishna's presence in that. जिससे हम कृष्ण पर ध्यान कर सकें, उनकी लीलाओं का साक्षात्कार कर सकें, Is simply by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lord Kapila says, for a long time and with great sincerity. So everything in this process of Krishna consciousness depends तो कपिल मुनि बोलते हैं कि दीर्घ काल तक गंभीरता से अनुसरण करना चाहिए on how we apply ourselves to this process. इस कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक उन्नति निर्भर करेगी कि हम कैसे उसे स्वीकार कर रहे हैं। And I was thinking as the devotee was translating from English into Hindi here, और मैं सोच रहा था उस भक्त को देख करके कि जैसे वो अनुवाद कर रहे हैं, how it's really good for me. ये कैसे मेरे लिए अच्छा है, Because then I can think about, I have more time to think about what I just said. जिससे मुझे और समय मिल जाए सोच करके बोलने के लिए। There's a famous rock and roll group called the Beatles. एक बहुत ही प्रसिद्ध म्यूजिकल ग्रुप था बीटल्स। How many people have heard of the Beatles? कितने लोगों ने उसके बारे में सुना है? Right, more than anything because of George Harrison, क्योंकि आप लोगों को जॉर्ज हैरिसन के बारे में because पता he है, was a wonderful devotee.
क्योंकि वो बहुत ही अच्छे भक्त थे who met Prabhupada when he was here. जब उन्होंने श्रील प्रभुपाद से मिले थे। And one of the other members in the group, और जो बाकी सदस्य थे बीटल्स ग्रुप के, named John Lennon, जॉन लेनन, who was also very favorable to the movement. जो कि इस्कॉन के लिए बड़े ही सकारात्मक थे। And he invited Prabhupada and the devotees to stay at his house, which was a huge castle near London. उन्होंने श्रील प्रभुपाद और उनके भक्तों को अपने महल में लंदन शहर के पास बुलाया था रहने के लिए, Where the devotees stayed for several years and had interesting conversations. लंबे समय तक भक्त वहां रहे और उनसे खूब चर्चाएं हुई। And that group was the most famous rock and roll group probably in history. पूरे इतिहास में सबसे प्रसिद्ध रॉकिंग ग्रुप थे बीटल्स। And in one of John Lennon's songs, और एक जॉन लेनन के गीत में he says something in English which is very interesting. उन्होंने एक इंग्लिश पद्य में बहुत ही अच्छी बात कही है। He says, life is what happens जीवन में जो होता है when you're busy making other plans. आप जब व्यस्त रहते हैं अपनी अपनी योजनाओं में। So there's a wonderful devotee by the name of Mukunda Dat. मुकुंद दत्त प्रभु नाम से एक बहुत ही अच्छे भक्त हैं। How many devotees have heard of Mukunda Dat, Prabhu? आपने कितने भक्तों ने उनका He's नाम सुना है? this amazing Vaishnav scholar and has all kind of amazing insights. And when he gives class, I always listen very intensely. वो बहुत ही उत्तम कोटि के भक्त हैं और जब वो कक्षा देते हैं तो बहुत साक्षात्कार। And I asked him one time, I said, Prabhu, after his class, I said, in your opinion, if there was one thing you would say was the most important thing in our progressive realization of Krishna consciousness, what would you say that thing is? मैंने उनसे प्रश्न करा था कि अगर आप बताना चाहें कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक वो कौन सी चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप क्या कहेंगे? And he said the most important thing, I think, in our development of Krishna consciousness is to try to realize where we are at any particular time in our devotional life. और उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है कि हम यह समझें कि हम अभी किस स्तर पर हैं। Because we are running on the chariot of our mind. क्योंकि हम हमेशा अपने मन के रथ पर ही सवार घूमते रहते हैं। And it's controlling our activities. और वही हमारी सारी क्रियाओं का नियंत्रण कर रहा है। Especially when we're more and more covered by the modes of ignorance and passion. और विशेषतः जब हम तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में रहते हैं। And as we come more to the spontaneous platform of devotional service, और जितना ज्यादा हम आत्मीय रूप से भगवत भक्ति कर सकेंगे, we experience different things, हम बहुत सारी वस्तुओं का अनुभव कर पाएंगे, which are sometimes feel very unpleasant. जो कि सामान्य रूप से बहुत अच्छी नहीं होती। In my own life, as my body gets older, मेरे स्वयं के जीवन में जैसे जैसे ये शरीर वृद्ध हो रहा है, and I don't have the power of my senses that I used to have, और मेरी इंद्रियों में पहले जैसी शक्ति नहीं बची है, and my mind and my memory starts failing me, मेरा मन और मेरी स्मरण शक्ति कई बार धोखा दे देती है। it's a very frustrating situation. ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग स्थिति है। And in older age also, the possibility of becoming depressed, it becomes more and more present. और जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता है वो तनावग्रस्त होता जाता है, Something as a young person I never experienced. जो कि युवा सामान्यतः अनुभव नहीं करते हैं। But as devotees, we are duty bound to try to realize Krishna in everything. लेकिन हम भक्त हैं, हमारा ये कर्तव्य है कि हम कृष्ण का साक्षात्कार हर वस्तु में करें। And therefore, everything that happens in our life, good or bad, we should understand is happening for a purpose. और हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, सब कुछ के पीछे एक कारण है। And if we accept it and we apply that and try to see Krishna's purpose through that thing, we will become a very advanced devotee in a very short period of time.
और जब हम इस सिद्धांत को अपनाते हुए देखते हैं कि हर वस्तु के पीछे कृष्ण की कुछ आयोजना है, बहुत प्रगति करते हैं। As I get older, it's very frustrating जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, बहुत ही तनावग्रस्त स्थिति होती and है, difficult in different ways. और ये बहुत ही कठिन है, बहुत अन्य अन्य वस्तुओं के द्वारा। But it's also really wonderful. लेकिन ये बहुत ही अच्छा भी है। I have an old friend of mine who is a devotee from Scotland, Punyatama Prabhu. We were very, very close friends. Unfortunately, he passed away very tragically in a fire in a hotel he was in. But he used to tell me, and he had this intensity of devotion, which was amazing. And he's from Scotland, and it's known that people from Scotland or Ireland, they're called in Ireland, they're called the Fighting Irish. In Scotland, they're big fighters. They love to fight. मेरे एक पूर्व मित्र, मेरे पुराने मित्र हैं पुण्यात्मा प्रभु, And जो then- स्कॉटलैंड से हैं। This devotee was the #1 book distributor in the world 2 years in a row. ये पूरे विश्व में 2 बार सबसे बड़े पुस्तक वितरक के रूप में उपाधि उपलब्ध कर चुके थे। And he lived in Scotland, in Europe. वो स्कॉटलैंड यूरोप में रहते थे। And he was so fearless, so courageous, and so bold in his book distribution. वो इतने निर्भय और इतने साहसी थे अपने पुस्तक वितरण की सेवा में। He would go into the slaughterhouse. वो कसाई घरों में चले जाते थे। There would be a guy there with an electric shock in his hand. और उधर एक व्यक्ति इलेक्ट्रिक शॉक लेकर के खड़ा रहता था। And the cows would come on the assembly line and he would shock the cow so they would become unconscious and then they would cut off their heads. वहां पर जो कसाई होता था, गाय एक एक करके आती थी, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देता था और उनको मारता था। And he would go into the slaughterhouse unannounced. और ये भक्त वहां पर बिना किसी को बताए कसाई घर में चला जाता था। He would walk right up to that guy. और वो कसाई के पास वो भक्त जा करके He would grab his arm. उनका हाथ पकड़ लेता था He would rip that device out of his hand. और उनके हाथ से गाय को मारने And वाले he यंत्र would- को छुड़ा लेता था। And he would put one of Prabhupada's books in his hand. और श्रील प्रभुपाद की बुक उसके हाथ में थमा देता And he would make him give a donation. और उनसे दान भी ले लेते थे। He was a wonderful devotee, wonderful spirit. And he used to tell me, और वो मुझे बताया करते थे, he'd say, Banbhatta, he'd say, we only have a few breaths left. वो हमेशा बोला करते थे कि बनभट्ट, हमारे पास कुछ ही सांसें बची हैं। What are we going to do with our last few breaths to please Srila Prabhupada? और हम उन आखिरी सांसों में क्या कर सकते हैं श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए? So as I get older, I start feeling these symptoms like chronic fatigue और जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मैं अनुभव कर पा रहा हूँ थकान को and brain fog. और मेरे मस्तिष्क की अक्रिया को। Sometimes I'm giving a class or sometimes I'm talking to someone कभी कभी मैं क्लास देते देते या किसी से बात करते करते and there's a thought in my mind और मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या बोलना है, and there's a progression of my thought. और मेरे मन में क्रम बना होता है कि मैं क्या बोलूंगा। And as I'm talking, और जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, all of a sudden the thought I have in my mind एकदम से जो भी मेरे मन में विचार थे falls off a cliff. वो गायब हो जाते हैं। And where did it go? और मैं सोचता हूँ कहाँ चले What was I saying? मैं क्या बोल रहा था? This is old age. ये बुढ़ापा है, But it is such a blessing. लेकिन ये एक आशीर्वाद है, Because now I know at this stage of my life, क्योंकि अब मैं अपने जीवन के इस पड़ाव पर हूँ। I only have a few breaths left. मेरे जीवन के कुछ ही सांसें बची हैं। What is this life? मेरा जीवन है ही क्या? How long do we have to live? हम कितना लंबा जी सकते हैं? It's such an incredible illusion. ये एक बहुत ही बड़ा मोह है। Yudhishthir talks about that, doesn't he? युधिष्ठिर महाराज इसके बारे में बोलते हैं। What does he say in the Yaksha Prashna? क्या बताते हैं वो यक्ष को? Yamaraj asks him, what is the most wonderful thing in this world? यक्ष पूछते हैं कि सबसे आश्चर्यचकित बात इस दुनिया में क्या है? How many answers could there be for that? लोग कितने इसके उत्तर दे सकते हैं? What is the most wonderful thing in this world? सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? I mean, who won the big soccer match? कौन एक बड़ा सॉकर मैच जीत सकता है? I mean, you know, what is happening with
with my daughter's marriage? मेरी बेटी की शादी में क्या चल रहा है? What did I have for so many wonderful things? मैं बहुत सारी आश्चर्यजनक बातें कर सकता हूँ, But King Yudhisthira, लेकिन युधिष्ठिर he महाराज is a son of religion personified. वह धर्म के पुत्र हैं And he has all the perfect answers. और उनके पास सबसे सटीक उत्तर So है। when he was asked, what is the most wonderful thing in this world? तो जब उनको पूछा गया कि इस दुनिया में What was सबसे his आश्चर्य- reply? Is that everyone and everything is dying. उन्होंने देखा कि सभी लोग मरते हैं And we have personal experience of it. और हम सब ये देखते हैं, अनुभव But करते हैं, every single one of us thinks it's not going to happen to me. और हर व्यक्ति यही सोचता है कि मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। So when we learn how to associate with devotees, और जब हम सीखते हैं भक्तों के संग से and when we bring our everyday practice of Krishna consciousness, thinking this is the last day, this may be the last day I am alive on this planet. हमें सोचना चाहिए कि ये मेरा आखिरी दिन है इस जीवन का, और इस भावना से कृष्ण भक्ति करना चाहिए। That is the intensity we have to have in our spiritual practice. ये तीव्रता हमारी आध्यात्मिक जीवन And then में we can realize Krishna in every page of Srimad Bhagavatam. तब हम कृष्ण को भागवत के हर पृष्ठ में समझ पाएंगे, And these wonderful pastimes we're hearing about Krishna और उनकी सारी लीलाएं जो यहाँ पर will, वर्णित हैं, will become alive in our heart. ये सारी लीलाएं जीवंत हमारे हृदय में हो जाएंगी, And we'll feel like we are there और personally. हम ये समझ पाएंगे कि हम वहीं पर हैं, उन लीलाओं में हैं। So I apologize, I went way over time. मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं समय सीमा से आगे निकल गया। Please chastise me so I won't do it again. मुझे आप डांट सकते हैं जिससे मैं दोबारा ये गलती ना। And any questions or comments? अगर कोई प्रश्न या टिप्पणी It's got to be quick because we're missing prashad. हम What time do they serve until? प्रसाद कितने बजे तक होता है? When do they finish? 10 o'clock? 9:45. So we have a lot of time. If anyone needs to go to breakfast, please don't let me stop. Go immediately. The rest, anybody else wants to ask a question or hear them. जिनको प्रसाद के लिए जाना है वो जा सकते हैं, और जिनका प्रश्न है वो प्रश्न पूछ सकते हैं। So any questions? Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu, please accept my humble obeisances. You spoke about dualities of this material world, and also spoke about how to overcome the mind. In this age of Kali, there are so many distractions and so difficult to overcome those challenges and stay on the path of Bhakti for a long time. But you have done it, you have been in Bhakti for more than half a century. So what are the things that you followed so that you can derive inspirations from your activities, how you have been able to stay on course of Bhakti for more than half a century? प्रश्न है कि आप 50 वर्षों से भक्ति का अनुसरण कर रहे हैं। इस भौतिक संसार के द्वैत भावना में भक्ति करना काफी कठिन है, तो आप हमको क्या सलाह दे सकते हैं? हमें क्या क्रियाएं करना चाहिए जिससे हम भी आपकी तरह लंबे दीर्घ काल तक भक्ति कर सकें? I would say a lot of it is due to association. One of my मैं बोलूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण भक्तों का संग है। One of my best friends growing up in Krishna consciousness was a devotee named Vaisheshika Prabhu. जैसे कि मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं वैशेषिका प्रभु। We were very, very close, हम बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, and we should always be desiring more advanced association. और हमें हमेशा अपने से उन्नत भक्तों का संग करना चाहिए। We have no idea how materially attached we are. हमें कोई भास भी नहीं है कि हम कितने भौतिक रूप से आसक्त हैं। And whatever stage of our life, whether it's brahmachari, grihastha, or vanapras, और हम चाहे वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, we have to apply ourselves to the process of Krishna consciousness with great enthusiasm. हमें कृष्ण भक्ति का अनुसरण बहुत उत्साह से करना होगा। That's one thing I can honestly say that I've always applied my practice with. मैं ये वाक्य बहुत ही गंभीरता से बोलना चाहूंगा कि मैंने अपने जीवन में अपनाया है। I have a very low birth. मैं बहुत ही नीच जन्म में उत्पन्न हुआ हूँ। I do not have very strong intelligence. मेरे अंदर बहुत उन्नत मेधा नहीं है। I'm not
a pandit. I'm not learned in the Shastra, मैं एक पंडित नहीं हूँ, शास्त्रों को नहीं जानता हूँ, but I have a little bit of enthusiasm. बट मेरे अंदर उत्साह है. And this has granted me gradually increased desire to achieve a more advanced platform of Krishna consciousness. और इसी माध्यम से मैं आध्यात्मिक उन्नति कर पाया. But we have to get out of this illusion we're in, हमें इस मोह से बाहर निकलना होगा that we have some time left in this world. कि हमारे पास बहुत सारा समय है. We don't have any time left. हमें समझना होगा हमारे पास समय नहीं है. Prabhupada would often say, you're a young man, I'm an old man. Where's the guarantee you're not going to die before I do? प्रभुपाद कई बार बोलते थे कि आप युवा हैं, मैं वृद्ध हूँ, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आप मेरे पहले नहीं मरेंगे. Look at the world we live in. अपने आसपास की जगत को देखिए. You hop on a scooter, you get in a car here, anywhere in India, और आप अगर स्कूटर या कार भारत and में you're चला रहे हैं, taking your life in your hands. और आप सोच रहे हैं कि आपका जीवन आपके You हाथ know में. what really helped me as a new devotee in my Krishna consciousness when I came to India? मैं जब नया भक्त था और भारत आया था, You know what really helped me have faith that there is a God? मेरे अंदर कैसे विश्वास आया कि भगवान है. I just drove around in a car in cities in India. मैं भारत में गाड़ी चला करके अनुभव कर And पाया that कि भगवान है. gave me some faith that there must be a God. उसने मुझे विश्वास दिलाया कि भगवान होते हैं. Because other than super soul that's arranging so all these people who are riding like this don't smash into each other, क्योंकि परमात्मा के बिना ये जो इंडिया का ट्रैफिक है उसको कोई नहीं संभाल सकता. there would be literally millions of accidents every day. नहीं तो रोज ही लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु होती है. And to this day, I still cannot believe it. और आज तक मुझे विश्वास नहीं होता कि कैसे चल रहा है. And it gives me great faith और यही मेरा विश्वास बढ़ाता है that there must be a super soul. कि परमात्मा होते हैं. Anyway, I hope that answered your question a little मैं bit. आशा करता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर Any मिला. other questions? और कोई प्रश्न? Yes, Maharaji. Over here. Can you give the microphone? Yes. Okay. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. मेरे दो प्रश्न हैं. एक तो सबसे पहले प्रभु जी ने कहा था कि इंद्रियों के प्रति हमारी विरक्ति होनी चाहिए. तो मैं स्वयं में देख रही अपने आप में विरक्ति की बजाय आसक्ति बढ़ रही है. तो She has two questions. One question is, you have told that we should be detached from our senses. But I am experiencing that I am getting more and more attached to my senses. So how to deal with that? As long as your senses are engaged in Krishna's service, that attachment can be there, no problem. And, you know, अगर आपकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगी हैं तो वो इंद्रियों के प्रति आसक्ति में कोई दिक्कत नहीं है. this practice of Krishna consciousness is inconceivable. ये कृष्ण भावनामृत का पद बहुत ही विस्मयजनक है. Atashi Krishna namadi namavigrayam inriya sevam mukhe jivada swayam eva smarayada. Nobody can understand Krishna through their mind and senses. कृष्ण को कोई भी अपने मन और इंद्रियों से नहीं समझ सकता. But when our senses are saturated with service to Krishna, बट जब हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, by Krishna's grace, कृष्ण की कृपा से we will become detached. हम अनासक्त हो जाएंगे इंद्रियों से. We do not have the power to become detached artificially. हमारे स्वयं के अंदर वह विरक्ति लाने की शक्ति नहीं है. It's Kali Yuga. ये कलयुग में चल रहे हैं. Men or women, doesn't माता है या matter. प्रभु, This is our practice. This is Yukta Vairagya. ये युक्त वैराग्य का सिद्धांत है. What are all these things? ये सब वस्तुएं जो आसपास में आप देख रहे हैं, In this world, we're thinking they're material. भौतिक जगत में इनको भौतिक पदार्थ माना जाता है, They're not material. लेकिन ये भौतिक नहीं है. Not from Krishna's perspective. कृष्ण इन्हें भौतिक रूप से नहीं देख रहे. Everything is spiritual. हर वस्तु आध्यात्मिक है. It's only Krishna's energy. ये कृष्ण की ही शक्तियां हैं. Now we can't decide that on our own. हम उसका निर्णय स्वयं कर सकते हैं. We have to take the spiritual master's direction on that.
हमें गुरु के निर्देशन में चलना होगा, Therefore, we're engaged in service, इसलिए हमें सेवाओं में लगाया जाता है and we're very careful in that service और हम बहुत ही सावधानी से उस सेवा को करते that हैं, we're not doing things outside the purview of Krishna consciousness. जिससे हम कृष्ण भावनामृत के दायरे में अपनी सेवाओं को करें। But many things we're engaged in, activities with our family, with different people that are borderline. और हम जब परिवार से व्यवसाय से भी संबंध अपनी क्रियाओं को करते हैं, And उसमें we're- भी एक रेखा है And we're not sure always exactly what's proper. और जब हमें ये निश्चित ना हो कि क्या करना है क्या So we have to do everything with an attitude of intense prayer. तब हमें कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए Understanding Krishna is in everything. कि कृष्ण सभी वस्तुओं में उपस्थित हैं And our spiritual master is guiding us. और गुरु हमें निर्देशन कर रहे हैं, And if we make some mistake, और अगर हम कुछ गलती भी करेंगे, because Kali Yuga, every action is covered by some mistake, क्योंकि कलयुग में हर वस्तु में कुछ ना कुछ दोष है, we have to have faith Krishna and the spiritual master will forgive us. कि कृष्ण और गुरु हमको माफ कर देंगे, ये विश्वास हमें होना चाहिए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srimad Bhagavatam ki jai. Ujjain Yatra ki jai. Hare Krishna. Thank you for your kind attention. Thank you, Prabhu. His Grace Banbhatta Prabhu ki jai.